एनएफटीज की जो देखिए लिखा हुआ है, बाद में आप देखिए रिसर्च करके पढ़ लीजिएगा। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहिए तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल है, ओपन सी, एक्सी मार्केट प्लेस है, लार्वा लैब्स, क्रिप्टोपूम, एनबीए टॉप शॉर्ट, राइट। तो दैट इज वेयर दिस प्लेटफॉर्म कम्स हैंडी। लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता है कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर चीजें हैं क्या, क्योंकि हम नॉर्मली फोन को कब ऑन करते हैं? 5 बजे करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फोन जाता है, अरे तुम्हारा आया क्या? मेरा 3 बजे तक नहीं दिखा है, ठीक है, अरे 4 बज गया, दिख नहीं रहा है। Once again, gentlemen, ladies and gentlemen, we are gathered here today to speak about blockchain technology in general, right? Okay, now can anyone tell me how were transactions done in past? जब राजा महाराजा होते थे, उस जमाने में ट्रांजैक्शन होता कैसे था? जब बैंक नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, तो कैसे होता था? लेन देन कैसे होता था? व्यवहार कैसे होता था? ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको ये पता चलेगा कि बार्टर सिस्टम कुछ नहीं होता है। ये होता है कि आप मुझे एक्स दो, मैं आपको वाई देता हूं, ट्रांजैक्शन हो गया। या और भी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूं तो एक फार्मर दूसरे को अनाज देता है, उसके बदले में दूसरा फार्मर इसको अपनी बकरी देता था। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। हो गया ना ट्रांजैक्शन, उसने एक दिया, उसने दोबारा उसके बदले में कुछ और दिया, ये बार्टर सिस्टम हो गया। तो जब तक किंगडम से ये सिस्टम चलता रहा, फिर बाद में कुछ किंग्स ने इसको अपना करेंसी भी लाया, जिसमें सिक्के भी आए, ये सब चीजें थोड़ा पहले कोशिश की गई। ठीक है, ये सब चीजें आप कहोगे मैं क्यों बता रहा हूँ, रीजन उसका है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब तक थोड़ा सा आपको बेस नहीं पता होगा तब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई क्यों, ये चीज क्लियर नहीं होगी। डायरेक्टली अगर मैं ब्लॉकचेन के ऊपर बात करना शुरू कर दूं तो फिर आपको समझ नहीं आया। थोड़ा बेस पता होना चाहिए, आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्यों आया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद में ट्रांजैक्शन जो है वो चेंज हुआ, राजा महाराजा गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई पूरी दुनिया में। इशू फिर वही था कि ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए, ठीक, गवर्नमेंट के सामने। तो बैंकिंग सिस्टम का इजाद हुआ था बहुत टाइम पहले, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। एक मिनट, ये पीछे दब गया। ठीक है, हिंदुस्तान में सबसे पहला बैंक जो आया था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770 इन कोलकाता। दैट टाइम इंडिया का कैपिटल या कमर्शियल कैपिटल कह लीजिए कोलकाता हुआ करता था। तो उस टाइम पे ये बैंक शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, 1832 में ये बंद हो गया था। ठीक, उसके बाद फिर आया था 16th सेंचुरी के लास्ट में। एग्जैक्ट बैंकिंग का क्या मतलब होता है, बैंकिंग कैसे चलती है, वो 16th सेंचुरी के लास्ट में शुरू हुआ था, और जिसमें बैंक का कैश ट्रांजैक्शन, लोन देना, ये सब सारी चीजें शुरू हुई थी। आजकल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है कुछ इस तरह से है, बीच में बैंक है, बाकी सारी चीजें कनेक्टेड होती है, कोई लोन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दैट्स व्हाट सिस्टम वी हैव एज ऑफ नाउ। अब सवाल ये था कि बैंक तो ठीक ठाक चल रहे थे, पैसा सबका आ रहा था, जा रहा था, सारा कुछ ठीक ठाक था, तो बीच में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने की वजह क्या थी, रीजन क्या था? बैंक में आज भी आप देखेंगे कि एक सिस्टम जो होता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत नहीं होती। ठीक है, पैसा हमारा होता है, हमें किसी रीजन से दूसरे को पैसा भेजना, चाहे बिजनेस रीजन हो चाहे पर्सनल रीजन हो, ठीक, और हमें तंग भी किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। सब कुछ करने के बाद में फाइनली पैसा जाता है, और फिर भी हमको पता नहीं होता कि कब पहुंचेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, कितना लगेगा। तो ये जो पॉइंट था, दिस इरिटेटेड लॉट ऑफ पीपल इन वर्ल्ड, और कुछ लोग काफी सीरियसली इसको ले लिए, और यही ट्रिगर पॉइंट था कि जब पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्यों न है।
हम ऐसा कोई सिस्टम क्यों ना ईजाद करें जिसमें हम आपस में ट्रांजैक्शन कर लें, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में ना हो। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे बैंक से है, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट था उस टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, ठीक। और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाने लगा। ये क्या चीज होती है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या? दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। जो लोग बिजनेस में हैं, ऑफिस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनको पता होगा लेजर क्या होता है, ठीक है। पूरे बिजनेस की जान लेजर होती है। लेजर आपका सही से मेंटेन है, आपकी कंपनी चल रही है, उसमें गोची किया, ऊपर नीचे किया, गड़बड़ होगा। Looks like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside the blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside the block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the Genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You can effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus.
They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical